Well, we are going to be tracking the entire face-off over pollution, the parali, the politics, as well as the pollution right here on Times Now. But for the timing, let's move on in the bulletin and tell you how Ayodhya's all geared up for the Deepotsav celebration. In fact, Ayodhya Deepotsav event is going to be presided over by Chief Minister Yogi Adityanath, will be comprising of over 35 lakh oil-lit earthen lamps. Ram Ki Pedi is all set for a historic spectacle. You can see some of those visuals on your screens. Well, celebrations, of course, have already begun at the beginning of the week. Cultural events have been taking place in the presence of the Union Tourism, the Culture Minister, Gajendra Singh Shekhawat, as well as ministers of the UP Cabinet. Now, this year's Deepotsav is the first since Ram Lalla's consecration or the Pran Pratishtha at the Grand Temple. It is the 8th Deepotsav in the regime of Chief Minister Yogi Adityanath. Well, in fact, let's get you a report which has been filed by our colleague Vinod from Ramnagari. 100 सालों बाद ये पहला मौका है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये बेहद अलौकिक है और इसीलिए आपको दिखाएं कि जो राम मंदिर है उसको किस तरीके से सजाया संवारा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये आपको सीधे राम मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बाकायदा राम मंदिर के मेन गेट देखिए लिखा है जय श्री राम। ये गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा चूंकि अभी भी काम चल रहा है। ऊपर के जो दूसरा तल है मंदिर का उसका निर्माण कार्य चल रहा है। लिहाजा फर्स्ट फ्लोर जो है जहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान है वो उसको फूलों से पूरे परिसर को सजाया गया है। करीब 5 टन फूल जो है वो मंगाए गए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाए गए हैं जिससे पूरे इस राम मंदिर परिसर को सजाया गया है। आपको दिखाएं तस्वीरें कैसे भक्त जो है वो भी रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज उनके लिए ये अद्भुत क्षण है जब वो प्रभु श्री राम को उनके भव्य राम मंदिर में विराजमान देखेंगे और शाम को जब पूरा अयोध्या जो है वो दीपों से जगमगाएगा। 2 लाख दिए जो है मंदिर के अंदर भी जलाने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके के 3 तरह के अलग दिए जो है वो राम मंदिर के लिए मंगाए गए हैं ताकि जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है मार्बल का उसमें दाग न लगे, दियों की रोशनी से वो खराब न हो उसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए विशेष तरीके के दिए मंगाए गए हैं। गाय के गोबर के बने दिए भी जलाए जाएंगे मंदिर परिसर के अंदर। Well, in fact, let's go across live to Ayodhya. Amita is joining us with all the color on the ground. Amita, we know that the world record so far is that of 28 lakh diyas. But I believe this time around, we are 25 lakh diyas, if I'm not mistaken. But this time around, I believe they intend to break that world record. How many diyas are we going to see all lit up to welcome Ram back? Well, Meghna, good afternoon. It's a very hot, day here in Ayodhya, but we can feel as far as the energy in the air. And what you see around me are thousands and thousands of volunteers. First, they have placed the diyas in the symmetrical manner, and now they're putting in the oiled wicks. And later, as the sun goes down, we will be looking at all of these diyas being lit. And as you rightly said, this time the record is of 25 lakh diyas. The Guinness World Book Records team, which is already here, and announcements that are being made of encouragement. Of course, also talking about how many wicks that have been placed, and it seems to be like a competition that seems to be taking place at all of those ghats with a number of volunteers that are there on ground, many of them enthusiastic, saying that this time the record would be broken. An estimated 28 lakh diyas will be lit, but they hope to break the record. Last year it was 23 lakh diyas. This time it would be a much bigger record of 25 lakh diyas that are to be lit in this magnifying, and it would be an electric picture. I mean, if you see around me, this is the area where the laser shows will also happen in the evening when Chief Minister Yogi Adityanath is expected. And here this entire area would be lit not just with diyas but also with lights and lasers. So this is the live update coming in from Ram Ki Pedi on the ghats of the river Saryu in Ayodhya. Meghna. Well, these are spectacular visuals that you have been getting for us, Amita. Tell us, what do we expect through the day today? Because Chief Minister himself is going to be there from Ram Leela. What do we expect?
Well, this time around, as far as the Chief Minister is concerned, because this is going to be the 8th Deepotsav, this time the Deepavali is even more special because this is the first Deepavali after 500 years when Ram Lalla returns home. Of course, the grand Pran Pratishtha ceremony that happened in January. Now, on the occasion of Choti Deepavali, Chief Minister Yogi Adityanath himself would be a part of this. So, in and around all of these areas, as you see this setup of these seats that have been put in, Chief Minister Yogi Adityanath would be coming to the banks of the river Saryu in the evening. There is going to be a puja, a Shobha Yatra this morning that was taken out. And of course, when it comes to people who would be in a way dressed like Ram, Sita, Lakhan, Hanuman, all of them, they would be worshipped, the Aarti would be done, and then this would be a grand occasion when the diyas that would be lit, the laser show would begin, and that is how the Deepotsav will be celebrated today. Oh, that's going to be a spectacular view. And of course, Amita is right there on the ground getting us minute-by-minute updates, all the color, the fervor, and let's not forget all the astha as well this Diwali season, isn't it? Amita, do stay on with us. In fact, 28 lakh diyas, as we've been discussing, are going to be lit across 55 ghats, and this includes Ram Ki Paidi. It is going to be lit up by 30,000 volunteers from the Awadh University. Guinness Book team will also use drones to verify the count as well. In fact, Delhi-based artists have made several tableaux, and the procession is going to start from Saket Mahavidyalaya. It is going to be featuring 18 tableaux, 11 of them by the Information Department and 7 by the Tourism Department. These will be depicting scenes from Ramayana. Artists from different states are going to be presenting folk dances like the Farai, the Brahma, Siya, and several other such dances, as well as cultural festivals are being planned. This event is going to be concluding with the display of fireworks and rangoli in a city beautifully adorned for this occasion. As you can see on your screens, they have added that the Chief Minister would land at Ram Katha Park around 2:30 p.m. roughly, and then he's going to be presiding over the coronation ceremony as it is being held ritualistically of Lord Sri Ram and Sita. All the dignitaries will be pulling the ceremonial chariot, and have a look at this report meanwhile, filed by our reporter Shweta Bhattacharya from the ground. दीपोत्सव शाम को है, उससे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा में सबसे पहले दर्शन कीजिए बाल्यकाल के, बाल अवस्था के हमारे श्री राम लला का, जो पालने में सवार है इस वक्त देखिए। और ये बाल्यकाल के जन्म के बाद जो श्री राम की मूर्त है इस पालने पर लगाई गई है। माता कौशल्या और उनके पिता दशरथ इस वक्त उनके पालने के साथ आगे बढ़े। चलिए मैं आपको फटाफट से इस शोभा यात्रा के और पास ले जाती हूँ। ये शोभा यात्रा अयोध्या के साकेत डिग्री इंटर कॉलेज से निकल करके लता चौक यानी राम की पैड़ी के पास तक जाएगी। और ये देखिए एक के बाद एक जो झांकियां हैं वहाँ देखिए आपको दशानन नजर आ रहे हैं, जिनका युद्ध जिनके साथ यहाँ इस झांकी पर श्री राम के साथ चल रहा है। इसके आगे मैं और बढ़ूं तो ये देखिए बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो सुंदर सुंदर वेशभूषा पहने सर पर कलश रख करके ये आगे बढ़ेंगी। अभी देखिए इनके हाथों में कलश है। जब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये सर पर कलश रखेंगी और नृत्य भी करेंगी। और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको और झांकियां मैं दिखाऊं। वाकई अगर आप आज अयोध्या नगरी को देखें तो आपको लगेगा कि मानो जब श्री राम त्रेता युग में लंका जीत कर वापस आए थे राम नगरी, वैसी ही खूबसूरत छवि इस वक्त नजर आ रही है। और ये देखिए एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये किष्किंधा कांड है रामायण का। किष्किंधा कांड को यहाँ दर्शाते हुए, रामायण के प्रसंगों को दर्शाते हुए ये जो भव्य झांकी है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाऊं, चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाऊं तो ये शोभा यात्रा इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां आज यहाँ दीपोत्सव से पहले लगाई गई हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यानी हमारे संकट को हरो प्रभु श्री राम। और इस वक्त मैं आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ भी देखिए बजरंगबली आपको नजर आ रहे हैं, जामवंत हैं। और भी आगे आइए तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो कलाकार है वो तैयार हैं और नृत्य करते हुए ये जो कलाकार है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। यहाँ देखिए पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि जाहिर तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालने की। और बहुत ही मुस्तैदी और अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ अयोध्या में ना होने पाए। Well, right here on Times Now, it's going to be your destination for the mega Deepotsav and the celebrations on Choti Diwali in Ram Ki Nagri, Ayodhya. And of course, Amita, thank you so much for getting us those colors. We'll keep coming back to you.